God made good meditation hall for all of you. Because my meditation hall is one, above sky, below earth, around the sky. God loves you so much. He has created good meditation hall according to your need. This here vibration is very deep. It is not because of me or anyone else, because of all of you. Present time is ascending Dwapar Yuga. According to Yuga, if we are not living, we will have problem. For example, if I am fish, FISH, I need water to live. If I am amphibians like frog, my nature is dual. I can live in water, I can live in land. But I am cold-blooded animal. My temperature of body rises and decreases according to climate. But we are mammal. We are mammal, then our temperature is fixed. It will not increase or decrease according to the climate. Therefore, for human being, according to the present ascending Dwapar Yuga, Kriyayoga is must. Because to experience a state of yoga is the most important in the present era. How to experience a state of yoga? Yoga means absence of time and space. That is only one technique, Kriyayoga meditation, which is known as principal philosophy of Christ consciousness. The same teaching was offered by Jesus Christ to all people of the world. Same teaching was offered by Lord Krishna to all people of the world. Same teaching offered by Buddha, Mahavir Swami, and many other prophets like Kabir Sahib, Guru Nanak Dev Ji. They all have given the same technique. But because of the dark age means if there is something very precious metal means which will not have a rusting property like gold. Iron is having property of rusting. It decays faster. Gold is precious element. It doesn't go under rusting. But gold is gold. It will not decay with the passage of time. But iron will decay. Copper will decay. Therefore, we human beings should realize present era is Dwapar Yuga. Dwapar Yuga is always for one thing, to experience a state of yoga. To experience a state of yoga is the only authorized scientific practice, Kriyayoga meditation. If anyone who is not practicing with deep devotion Kriyayoga, unknowingly they will get suffering. Therefore, this Kriya is expanding very fast. Therefore, I have decided to give live practice. For the first time, I have given live practice of initiation steps. But some deep practices I have not given. But what I have given is sufficient. In future, I can give more. What I want to give message to all people of the world.
you must practice Kriyayoga meditation. And how to get literature of Kriyayoga. Autobiography of Yogi and the Holy Signs, two are the complete text. Because we cannot understand easily, therefore Paramahansa Yogananda has written lessons, self-realization fellowship, a Saraf lesson, Yogada part, lessons of Yog Satsang from Yogada part, Vaisas lessons. In these lessons there is some explanation of autobiography of Yogi and holy science. But this is the science which is endless, infinite. Nobody can claim that they can give full interpretation in writing or in speech. It is not possible. But what you are practicing Kriya Yoga, you keep on practicing it, and with the help of live session, with the help of autobiography of Yogi, with the help of holy science, we can proceed safely according to the present era, Dwapar Yuga. Therefore, intuitively I got message that I must give initiation steps live. Then I have given this time. In future I will give each initiation technique each year. When I explain, it becomes deeper and deeper. Therefore, each set of initiation is unique. Whatever was given last year, same technique is offered this year, but you will find some variation in explanation, but basic point is the same. And whatever you will listen the next year, basic point will be the same, but interpretation will be little different. What kind of interpretation will be different? Will be little more and more expanded, deeper. Therefore, I am going to explain today, if you follow holy science, after following holy science, you will understand Mahabharata completely. Otherwise, keep on reading Mahabharata. We will not understand. When you understand holy science, you will understand Bible very clearly. Otherwise, very difficult. By understanding holy science, we will understand all Vedas. In ancient human civilization, in Treta Yuga, Sat Yuga, human life was dependent on agriculture, plant agriculture, seeds, grains and fruits. And civilization were nearby a river. All civilization, suppose this is the river, on both sides, human civilization and agriculture farming. This was the lifestyle, healthier. With the passage of time, when violence increases inside, then we practice same violence outside. Then we start slaughtering animals. Dead bodies are always buried or cremated. Then we decided to put dead body in our stomach. Our stomach becomes a burial place. It is because of the violence inside when we feel. If I feel to kill someone, it is not easy to kill a human being. Then we kill sheep, goat, cow, buffalo, birds, because we have thought of killing. And when you practice Kriya Yoga, the thought of killing disappears from inside. Then our external behavior changes. Then taste changes.
then you start disliking meat and blood and flesh of animal. We don't like them. If you start liking again, we'll get again suffering. Therefore, what is in the Bible? Here in the Bible I have it. In this science of food is given plant-based nutrition. The same thing I have given in the science of food. Same thing is given in holy science. But sometimes we need animal product for quick energy. When you drink blood, you will have quick energy. Because blood is more digested form of all grains and seed. Therefore, in order to overcome weakness, we start drinking blood, eating eggs, drinking milk. Among all animal products, what I realized, what Mahatma Gandhi followed, goat milk. Therefore, I have gone through the details of goat milk. The goat milk have less problem to human being. When you consume the goat milk, there will not be problem of the liver, rising of cholesterol, or some artery deposition, something like as we have some cancerous effect when you take the much animal protein. Those protein starts clogging the arteries of the heart, coronary arteries, or carotid arteries, or anywhere here and there. And there is a blockade. When there is a blockade, flow of blood reduces. There is a lack of nutrition. But in the goat milk, minimum chances. Still, plant-based nutrition is the highest. According to my observation, we do not need goat milk also. But if due to any reason we have something extreme need, then it is better than all. In goat milk, what is the important thing? It is not the storage of milk 12 hours or 24 hours. Goat breast is having tendency to give the milk 3-4 times a day, little bit, 200 ml, 100 ml, maximum 500 ml. It is not like cow or buffalo give 20 liter, 10 liter, 5 liter. It is not. There is no storage of milk in the breast of goat. Because of this also, it is safe. Then what I request all of you, until you get some serious weakness like you have got repeated diarrhea, repeated vomiting, something, as Mahatma Gandhi got it many times, Paramahansa Yogananda he got many times, I got many times. In that goat milk helps for quick energy. Then what I request all of you, you try by your own research. Plant-based nutrition, what kind of plant-based grains, seeds, fruits you like. What is the ultimate truth, science? You should like all taste, all grains, taste and smell both. I found many persons, somebody called the mental problem, somebody. Then what that person was doing is smelling the leaf and eating the leaf. Is smelling the fruits, eating the fruits. You cannot eat as that person was eating. According to me, that person will have a good vitality. But he declared himself mental
all start understanding they are mental, but that person was not mental. He is in the USA, I will not tell name to anyone. But according to me, if you can smell the leaf of various plants, flower, fruits, grains, sky, air, you will have very strong bone, you will have very strong vitality, but you will have very strong illusion also. Very strong illusion means bodily attachment, lust of taste, lust of touch, lust of vision, lust of hearing. If you have great power to experience smell of all grains and seeds and fruits, air and sky at the same time, side by side, you will have greatest bodily affair also. Then it is very dangerous state that you will leave spirituality. But if you have this property, if you feel smell of all grains, all fruits, all leaves, smell of air, smell of sky, if you are master of Kriyayoga at the same time, you will have very strong body. You can work and serve like anything. Therefore, what I request you, what you did? I am requesting you that try to do your own research. Try to select a quantity of food, how much you can digest. What I observe, if before eating, after eating, you feel the same, that is very good stage. But generally we don't like. We like to feel some heavy after eating. This is general tendency. Until we start feeling heavy, we have confusion that we are hungry. In fact, we are not hungry. But we have not created loving the perception of lightness, that before meal, during meal, after meal, try to feel head to toe the same. If you practice this, oh, that is the very great. I have tried many times, but I can tell you plainly, I failed many times. When I try, I get it. When I am not aware, immediately I lose it. Therefore, I have to be fully aware all the time, then I get it. If I say, no problem, we can relax, today less work is there, then again I start enjoying feeling heaviness. Then I see lot of dream, that in dream I am taking class, I am going here and there, I lost my cell phone at Brussels airport. So many things I see here and there. If I try my best, still I feel little difficult. If I lose awareness, I am fully aware, I don't feel difficult. I enjoy it. Therefore, what we should feel, think of offering service more and more, like Gandhiji. If you are tired, I will not stop serving. If you cannot walk, still I will not stop doing service. There is one poetry, one poem, that is very nice, what Gandhiji was liking. I will tell you. First let me tell in Hindi. If we follow Gandhiji, we have no problem. Therefore, Paramahansa Yogananda requested all nations should follow Gandhiji to solve the troubles of the nation. Troubles of the nation means troubles of human being.
tables of animals living in the nation, tables of plant kingdom in the nation, tables of river, mountain, ocean, lake in the nation. If you want to remove all troubles, follow Gandhiji. When I am speaking in Hindi now, I request all of you, welcome your presence. Your honorable presence on this planet is very important. Feel head to toes your presence. It is the most important. Never try to find fault in this. Never calculate, I have done fault. Who has told you that you have done fault? Never listen anyone. Try to remove all morality what you have learned from childhood till today. Morality is only one. Practicing Kriyayoga is a morality. Having no desire for Kriyayoga, that is immorality. Accept this. Try to remember this. If you remember glory of Kriyayoga, you are trying your best to practice it again and again, then you are moral. Moral means M-O-R-E, more. More altogether. What is altogether? 24 elements. Take all together, all 24 elements, feel it more and more. Accept its glory is infinite. Glory of earth element, water element, fire element, air element, sky element, tanmatras, glory of sense organs, organ of actions, glory of mind, wisdom, ego, chitta. Excellent. Not accepting this is called immoral life. You can practice this all right, therefore try to remove the word, language, that I feel shame. Why you feel shame? I have done mistake. What mistake you have done? Forget. From today onwards, learn this, that head to toes is a structure of 24 elements. Feel head to toes, pay highest respect and honor to this. Feel it. Feel head to toes more and more. Presence of head to toes, changes within head to toes we feel, is the most important, nearest of near. Various changes within we feel. All varieties of changes, they are holy vibration. Vibration of purity. Accept this. I am going to explain the same thing in Hindi. अच्छी तरह से याद रखिए कि वर्तमान द्वापर युग के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। द्वापर युग हमेशा योग की स्थिति अनुभव करने की सलाह देता है। हम योग की स्थिति आए। पिछले द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे, योगेश्वर लॉर्ड कृष्णा। पिछले द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, पिछले अवतार में मैं ही राम था, तो राम की शिक्षा भी वही है। तो हम क्या आपसे कहना चाहते हैं, इस द्वापर युग में हम योग की अवस्था को पकड़ने का प्रयास करें। योग क्या है? दूरी की शून्यता। दूरी की शून्यता किसको कहते हैं? आपको अतीत पता चले। अतीत नहीं पता है, अतीत जाने का प्रयत्न करते रहिए। कैसे? पढ़ करके नहीं। भविष्य पता चले। कैसे? किताब लाएं क्या? नहीं, पता नहीं चलेगा। हम वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान को बहुत अच्छी तरह स्वीकार करते हुए, हेड टू टोज के जो प्रेजेंट स्टेट है, इसमें जितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उससे जुड़ते जाइए। वही परम धन है, वही सब कुछ है। इसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। आपको अतीत की झांकी खुलती जाएगी, तब भविष्य का पर्दा उठता जाएगा। अतीत और भविष्य दोनों का ज्ञान इसी से होगा कि सिर से लेकर पैर की उंगली तक हम इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। सिर,
चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की उंगली तक दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जितनी भी अनुभूतियां हो रही है सिर से पैर की उंगली तक, इसमें और एकाग्रता बढ़ाएं। सारी अनुभूतियां ये अमर तत्व की अलौकिक उपस्थिति है, ये पवित्र स्पंदन है, ये सब कुछ है। ये इसकी महिमा अनंत और असीम है। इस तरह अपने को स्वीकार करते जाइए, अतीत की भविष्य की झांकी खुलती जाएगी। वर्तमान में रहते ही हम भविष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, अतीत की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे भविष्य और अतीत की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक दिन आएगा पूरा भविष्य वर्तमान में होगा। इसका अर्थ क्या है? हम वर्तमान में भविष्य को देख लेंगे, पूरा अतीत वर्तमान में होगा। इस योग की अवस्था को कैसे प्राप्त करें? महावतार बाबा ने दिया है शिक्षा, क्रिया योग। क्रिया का अभ्यास से अतीत, वर्तमान, भविष्य सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। याद रखिए, जब आप क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो एक ही साथ हम वर्तमान में रहते ही अतीत और भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे वर्तमान है, ये भविष्य है, ये अतीत है, आगे बढ़ते बढ़ते सब मिला करके जब अतीत, वर्तमान, भविष्य जुड़ जाता है, ये स्थिति क्या है? ये वर्तमान है। इधर से आते ही अतीत भविष्य जुड़ गया, तो अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों जब एक बिंदु पर आ जाता है तो आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। वही जीवन का लक्ष्य। कितना आसान है जीवन जीना, क्या मजे की बात है। कुछ लाना नहीं, कुछ खरीदना नहीं, कहीं जाना नहीं, सिर से पैर की उंगली तक इसी की महिमा अनंत और असीम है। यह याद रखिए, जिसकी महिमा अनंत और असीम है उसकी अनुभूति निरंतर बनाए रखिए। किसी से हमें दिक्कत है, किसी के बारे में बहुत ही हमें नाराजगी है, भूल जाइए, उसकी भी महिमा अनंत और असीम है। प्रत्येक रचना की महिमा अनंत और असीम है। पहले अभ्यास अपने में करिए। यह द्वापर युग की डिमांड है। द्वापर युग की एक शिक्षा ये भी है, सिर से पैर की उंगली तक जितनी अनुभूतियां हैं, ये सुख और दुख है। कमजोरी आ रही है, गिर गए, गिर गए। तो अगर आप गांधी जी नहीं है, गिर गए, तो आप डर के शरीर छोड़ देंगे। गिर गए, अगर परमहंस से योगानंद नहीं है तो आप सोचेंगे तो हम गए। अब समितेश्वर गिरी लाहड़ी मार से अगर नहीं है, जब आप गिर गए तो गए, डर गए। तो सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं, जब आप क्रिया का अभ्यास करेंगे, रिचार्जिंग, श्वास पर मेडिटेशन, भ्रूमध्य पर जो कान बंद करके सुनते हैं, स्वाद और गंध पर सिर से पैर की उंगली तक, इसमें जितनी भी अनुभूतियां हैं, इसको जब सुनते हैं पूरे लगन के साथ, एकाग्रता के साथ, तो याद रखिए उस लक्ष्य को इसी जन्म में पा जाएंगे। लक्ष्य क्या है? हम स्वतंत्र हो जाएंगे। किससे? डर से, मृत्यु के भय से स्वतंत्रता। जब तक चाहेंगे रहेंगे, जब जाना चाहेंगे अपने अनुसार जाएंगे। परमहंस से योगानंद किस तरह से गए, जीसस क्राइस्ट कैसे गए, महात्मा गांधी कैसे गए, ज्ञानतारिक तीसरी कैसे गए, लाहड़ी माँ से कैसे गए, अपना अपना उन्होंने विधि चुना था। ऐसे आप भी ऐसे कोई अद्भुत अलौकिक विधि चुनेंगे और आनंद में जाएंगे, कष्ट में नहीं। आनंद में रहिए, आप आनंद में चले जाइए, फिर आनंद के साथ आइए। ये है इम्पोर्टेंट। ये चीज समझ में आ गई? आई अपने अंदर कौरव पांडव का जन्म कैसे होता है,
आज हम उसे समझेंगे। कौरव पांडवों का जन्म कैसे होता है? Within our own self, there is birth of devils and angels both. There is birth of Kauravas and Pandavas both. What is the technique? Like when seed sprouts, what is the technique of sprouting of a seed? In the same way, head to toes, this head to toes, it became zygote. Before it was Adam and Eve. One part Adam, one part Eve. Both become together, become zygote. From zygote, everything starts manifesting. How Kauravas and Pandavas manifested. There is a seed, the seed sprouts. What causes seed sprouting? Seed is sprouting. What is the cause? Sprouts is transforming into plant. What is the cause? Ultimate. Reach to the ultimate tree. In the same way, what is the cause? Two. They call the half uniting, becoming one, zygote. Half coming from one side, next half another side. You can say father, mother, both a half unit is coming and merging together, become zygote. Within the zygote, there is a birth of Kauravas and Pandavas. How? Today we are going to understand it. Before that, let us feel head to toes. सिर से पैर की अंगुली तक अनुभव करें। Pay highest love and respect to this unique existence, head to toes. सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है। इस समय जितनी अनुभूतियां हो रही है, इसकी महिमा अनंत और असीम है। Try to feel presence of head to toes. Presence of head to toes within whatever we feel. Head to toes, various changes within. Their value is infinite. Their glory is infinite. They represent purest of pure consciousness. सिर से पैर की अंगुली तक ये जो अलौकिक रचना है, अद्भुत है, इसकी महिमा अनंत और असीम है। इसमें होने वाले सभी परिवर्तन, ये सब पवित्र स्पंदन है। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। Place both palm on the posterior surface of head. Locate head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए। Try to shift head and spine upward slowly. सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ खिसकाएं।
Try to shift each and every segment of head and spine upward. सिर और रीढ़ के अंदर इसका प्रत्येक अंश को हम ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। फील प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ। All various activities we observe within head to toes, they are flow of immortal consciousness. They represent pure vibration. सिर से पैर की उंगली तक जितने प्रकार के परिवर्तनों की इसमें अनुभूति हो रही है, ये पवित्र स्पंदन है। अब हाथ को ढीला करें। रिलैक्स आर्म्स। We have to listen clearly, therefore try to feel head to toes more effectively in a standing position with the double breathing. Stretch, relax as you practice recharging number 1. हम इसको अच्छी तरह से सुन सकें, इसलिए रिचार्जिंग नंबर 1 जो अभ्यास करते हैं, खड़ा होकर के 2-3 बार उसका अभ्यास करें। Now we will sit. This is the Param. Param has one power. Nothing is impossible. He is one. He has power how to become infinite. He is undivided. How to reveal that I manifest in divided form. Therefore, from here, now arising, first thing we call love of God. This love of God is called the Kutastha, and his call is Purushottam. At the same time, from here, Maya. Maya manifests, Maya appears in 4 dimensions: sound, time, space, and size, Anu. This is the Maya. This is the love of God. Both becomes together. When becomes together, then what we get? One structure. This one structure, we say in the form of within head and spine, and one structure is together here. We feel that we are Lahiri Mahasaya.
If both are together all the time, we are Lahari Maharshi. If both are not deviating, one is going little shifting this side. Now we see, now the two things. One is here, one is here. Then we are human being. From here, something going out, something flowing inside. If two exist, then we are human being. Then in Kriyayoga, what we practice, we try to reduce distance. Slowly, slowly, distance is reducing. What happens? It will not go here, but keep on coming here. It increasing here, increasing here. At the last, it reaches here. Then both becomes one. That is what Kriya Yoga is. अच्छी तरह से याद रखिए, ये परम ब्रह्म है, यहाँ से प्रकट हुआ पहला लव ऑफ गॉड, कूटस्थ पुरुषोत्तम। उसी इसमें माया प्रकट हुई। माया जो प्रकट हुई, ये कैसे सुनाई पड़ा? आवाज के रूप में, फिर समय के रूप में, फिर स्पेस दूरी के रूप में, फिर अणु के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में, साइज के रूप में। ये सब माया है। और ये परमात्मा का प्रेम, दोनों मिलकर के एक हुआ, कब मिलकर के एक हुआ, हमारी स्थिति हो गई लहरी महर्षि, जीसस क्राइस्ट, 31 गिरि परमहंस योगानंद, उस स्टेज में आ गए। लेकिन अगर ये जो एक हुआ था, ये पूरा, ये बाहर की तरफ जाने लगा, बाहर गया, तब देखिए दो लाइन बन गई, एक ये थी, एक ये बन गई। दो होने की वजह से हम ह्यूमन बीइंग हो गए, हम एक सामान्य जनरल पब्लिक हो गए। तो क्रिया योग में क्या करते हैं कि जो बाहर वाली है, इसको शिफ्ट करते अंदर, शिफ्ट करते करते ये दोनों एक हो जाता। फिर जब दोनों एक हो गया, तब इस तरह से हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये वाला खत्म हो गया, यही हो गया। तो क्या हो गया? दूरी खत्म हो गई, स्टेट ऑफ योग आ गया। यही तो करना है, यही है क्रिया योग का लक्ष्य। You got the point? When you practice it, then fear is gone, stress is gone. You will never think that you have done sin or you are sinner. You never feel that anything has good or bad. You will lift your consciousness above dualities, and you will get knowledge how to increase strength of your bone, how to get rid of osteoporosis and arthritis, and all kind of illusion disappears. Just start practicing Kriya Yoga sincerely. You got the point, I think? सब लोग समझ में आ गया? नहीं समझ में आए, चिंता मत करिए, अभ्यास करते जाइए, समझ में आ जाएगा। हम तो आपके साथ हैं, हम 1000 बार इसको समझाएंगे। आपको समझ में नहीं आया तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपने सुना नहीं। If you couldn't hear, couldn't listen, not understanding, doesn't matter. I will explain again and again. I will never have any complaint that you are not listening, you are not practicing. No, I have no complaint like this. I will keep on explaining you. You have got the point? What little things you have to do, just nothing. Sit from here to here. बहुत सिंपल चीज करना है। यहाँ से खिसक करके यहाँ आ जाइए। कैसे आएंगे? इतना ही तो पाठ है, रिचार्जिंग पाठ है, ब्रेथ मेडिटेशन पार्ट 2, भ्रमण मेडिटेशन पार्ट 3, फॉली वाइब्रेशन मेडिटेशन पार्ट 4, इनिशिएशन स्टेज 5. You have only 5 lessons. So simple. Engineering, so much big syllabus, still you will not be engineer. Medical, so much big syllabus, you will not be medical doctor complete. There will be always lacking.
But in this only 5 lessons, practice this, you will be everything. कितना आसान है, इंजीनियरिंग पढ़िए कितनी किताबें, मेडिकल पढ़िए कितनी किताबें, तब भी पूर्ण इंजीनियर हो गए पता नहीं, सच्चे डॉक्टर हो गए कंफ्यूजन है। इसमें केवल 5 पाठ हैं, ठीक है, इसको पढ़िए। आज हम थोड़ा फिर आपसे एक निवेदन करते हैं। आज हमारा कुछ एंगेजमेंट है 7 बजे से लगातार 10 से 11 बजे तक। I have again today engagement from 7 to 11. Therefore, I am not going to stay here longer. Tomorrow, I have not given any engagement to anyone. I can have longer session. Then I can explain complete Mahabharata in the holy science. I can explain Bible and everything from tomorrow, not today. Again, हम फिर से आपको बता रहे हैं 7 बजे से 11 बजे तक हमारा विशेष एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट आश्रम का कार्यक्रम का ही है और कुछ नहीं। हमारा हर क्षण क्रिया का मूवमेंट में ही समय जाता है। कल से हम किसी को अब टाइम नहीं देंगे हम, जब तक महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, बाइबल अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर देंगे, होली साइंस, तब तक हम समय नहीं देंगे। From tomorrow onwards, I will not give any time to anyone. I will close this session for few days until we finish complete Mahabharata, holy science, Bible. All right? You agree for this? Okay, you are very great. Now let us enjoy our universal spiritual song. चलिए हम लोग इसको एंजॉय करें। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। हम विनम्र रहे, हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है। हम विनम्र रहे, हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। हम विनम्र रहे और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है। यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है। इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है, इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है। विनम्रता की तरंगों का ये निकास है, विनम्रता की तरंगों का ये निकास है। यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग, यही
सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। The one very important eternal song, which is music, which is lesson for all of us. I am going to read in English and Hindi both. First I will read in English. What is when Paramahansa Yogananda said, follow Mahatma Gandhi, why? Because Mahatma Gandhi demonstrated absence of fear in all dimensions. Maximum fear we get when we think we are losing our own self, means we are going to die. When I am going to leave body, this is maximum fear we have. But Gandhiji never had fear in that condition also. Like Jesus Christ, he was having no fear. Paramahansa Yogananda, he entered Mahasamadhi willingly, no fear. Gyanta Rikteshwagiri, no fear. Lahiri Maharshi, no fear. But this poetry, this song, which Mahatma Gandhi liked very much, and he used to listen it. Whether weary or unweary, O man, do not tarry. Do not tarry means do not stop. Stop not your struggle. You single-handed continue and do not tarry. चाहे थके या न थके हो, तुम मत रुकना, रुकना मत, संघर्ष अकेला है, करते जाना, तुम मत रुकना. The path that you will cross will wilder and confuse. जो रास्ते सामने आएंगे वो तुम्हें हैरान करेंगे, परेशान करेंगे. इसको याद रखिएगा, सभी के लिए होता है. Will be wilder and confused. The lips that you will save will be pitiable and mute. लेकिन याद रखिएगा, जो रास्ते सामने आएंगे तुम्हें हैरान करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन तुम दीन दुखी और मासूमों की जिंदगियां बचाओगे. याद रखना, अपना आत्मविश्वास कभी न खोना, तुम मत रुकना. Lose not your confidence, O man, do not tarry. Life that you will live will exhaust and enrage. Growing difficulties will continually frustrate, but beating these burden all, bearing these burden all, try to bear all these burden. What kind of burden? That you will feel exhaust, enraged,
so difficulties, continuous frustration, but still bearing means holding these burdens all. O man, do not tarry. तुम जो जीवन तुम जियोगे उसमें थकान आएगी, मुश्किलें होगी, लगातार बढ़ती बाधाएं अक्सर निराश करेंगी। ये सब बोझ उठाए चलना, तुम मत रुकना। अपने पर्वत जैसी मुश्किलों को लांघते जाना, जिनके पीछे सूखे और बंजर खेत हैं, फिर भी उनमें हरियाली उगाना, तुम मत रुकना। They jump over your troubles. How to jump over your troubles? Through initiation steps that are big like mountains, behind whom are fields that are dried up and barren, yet try and till that land. O man, do not tarry. The world will be dark. You shall enlighten it. All round will be blankness. You shall erase it. And even if life desert you, then, O man, do not tarry. Never stop to take a rest. O man, even strive to give rest. O man, do not tarry. दुनिया में बहुत अंधकार है, तुम ही उजाला लाओगे। चारों ओर की अंधेरे को तुम ही मिटाओगे। अगर जीवन भी छोड़े साथ, तब भी मत रुकना। जीवन छोड़े साथ यानी परमहंस योगानंद की तरह अंतिम समाधि, तब भी होश में रहिए। महात्मा गांधी की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, लहरी महाशय की तरह, गिरी की तरह। ये कैसे होगा? बस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू, इमोशनली यू कांट डू। ट्राई टू रिमेंबर इट। इमोशनली यू कांट डू। अच्छी तरह से याद रखिए कि आप इमोशनली नहीं कर पाएंगे कुछ। ये बहुत जरूरी है जानना। ये सब देख के घबराना नहीं है। हमारी हैबिट माउंटेन की तरह होती है, और हैबिट लाइक माउंटेन। हाउ टू क्रॉस हैबिट? वेरी इजीली, प्रैक्टिस इनिशिएशन स्टेप्स। जितनी हमारी आदतें हैं, बहुत ही लगता है कि आदतें छूटेंगी ही नहीं। अभ्यास करते जाइए, आदतों के हम बादशाह हो जाएंगे, रचनाकार। नई आदतों को जब चाहिए बना लीजिए, जब चाहिए हटा दीजिए। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट, यू विल रियलाइज यू कैन क्रिएट अ हैबिट एनी टाइम। You can create a new habit, and you can destroy habit. You can remove habit. This is for now. I'll meet tomorrow. देखिए, जो कार्यक्रम है, इसको जितना अधिकतम सब्सक्राइब होगा,
उतना लोग इससे जुड़ेंगे। जूम सेशन, लाइव सेशन से जितना लोग जुड़ेंगे उतना तेज परिवर्तन होगा। और परिवर्तन बहुत आवश्यक है, क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं अनेक देशों के बीच में। हर जगह छोड़िए, अपने अंदर ही लड़ाई हो रही है, परिवार में हो रही है, समाज में हो रही है। सभी लड़ाई झगड़ों को बंद करने के लिए बहुत आवश्यक है ये कार्यक्रम अधिकतम सब्सक्राइब किए जाए। जूम सेशन एक साथ लोग बैठे, आगे पीछे नहीं। जूम सेशन, लाइव सेशन में प्रयास हो एक साथ बैठे। लाइव सेशन में प्रतिदिन तो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, इसे जूम सेशन सैटरडे संडे लिया गया है, क्योंकि उसमें एक साथ बैठे। एक साथ बैठने का इफेक्ट अच्छा होता है, ये चीज को फैलाने में मदद मिलेगी। जब तक ये फैलेगा नहीं, कष्ट नहीं जाएंगे। ये जो क्रिया का मिशन चलता है प्रयागराज में, पावन गंगा के तट पर, संगम त्रिवेणी के आभा मंडल में, महात्मा गांधी मार्ग पर, जहां महात्मा बाबा आ चुके हैं, इसको अधिकतम लोग सब्सक्राइब करें। और जब जूम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड all fight and war are clashes on this planet. It has to be removed. When these sessions, whatever is happening at the bank of Holy Ganga, in the premises of Sangam Trivedi, at both sides of Mahatma Gandhi Marg, this place was blessed by Mahatma Babaji, 11 तारीख 3 If this message, this thing is subscribed more and more in the Zoom session, Saturday, Sunday, we should join together. When we join together, we have big impact. If you want war should stop, then spread this message. That's all.